हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वायर एमबीए कम्युनिटी। आई नो आप सभी एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा सीरियसली कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे क्योंकि अब कैट के लिए 6 महीने से भी कम टाइम रह गया है एंड यू मस्ट बी लुकिंग फॉर सो मेनी स्ट्रैटेजीज सो दैट आप अपना कैट की प्रिपरेशन एफिशिएंटली कर पाओ। वेल, इन दिस वीडियो आई विल बी गाइडिंग यू टुवर्ड्स द वीआरसी strategy that you need in order to ace CAT 2024. So make sure you watch this video till the end and do not forget to subscribe our channel. To start with, let us first understand the VARC section in CAT 2024. क्या पैटर्न होता है VARC सेक्शन का? तो as you all know, CAT का एक defined syllabus नहीं होता है. Hence, there is no prescribed syllabus for CAT VARC section as well. And VARC, as the name suggests, दो parts होते हैं, verbal ability and reading comprehension. जिसके लिए आपको preparation, the strategy that you need to opt for is different. So let us understand this now. The section mainly consists of new subparts, particularly known as reading comprehension and verbal ability. Reading comprehension passages are asked from and verse genres. Yes, RCs आते हैं आपके जिसमें genre wise RCs आपको दिखेंगे, which is science, politics, psychology, society and culture, history, and etc. etc. Now verbal ability, यहाँ पे आपको questions दिखेंगे topics like parajumbles, parasummary, odd one out and fill in the blanks. So एक बार हम pattern समझते हैं कि कितने questions और कितने total marks होते हैं VRC में. एआरसी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है कैट में, 24 क्वेश्चंस होते हैं. दैट मींस आपके टोटल 72 मार्क्स कंप्राइज करता है आपका वीआरसी सेक्शन. नाउ फॉर दीज 24 क्वेश्चंस आपको 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइम मिलेगा. फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपके 3 मार्क्स मिलते हैं एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा. नाउ वीआरसी में आपके थीटा क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको आंसर्स टाइप करने पड़ेंगे जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. तो आपको वीआरसी में ऐसे 4 क्वेश्चंस दिखेंगे. Verbal ability के आपको 8 questions दिखते हैं and 16 questions are from the RCs part and the difficulty level for the VRC section is moderate to high. अब हम VRC का एक बार syllabus समझते हैं and as I mentioned, verbal ability part में आपको parajumble, parasummary, odd one out and fill in the blanks से questions मिलेंगे and RCs में आपको genre wise RCs मिलेंगे जिनके topics मैंने आपको previous slide पे बताया था. So as you can see, RCs में आप देख सकते हो the most asked genres are science, politics, psychology, society and culture, history, abstract, miscellaneous and mixed genres. And then there's parajumble, parasummary, odd one out, fill in the blanks for the verbal ability part. चलिए तो let's start with the problems that you face in the VRC section before we jump into the strategy wala part. The most common problem faced in the CAT VRC section is reading itself, as most of the aspirants generally do not have a habit of reading. This might sound silly and obvious. However, this is the case because for most of the CAT aspirants, English is not their native language and they do not converse or write in the language frequently, which eventually results in poor comprehension abilities. Yes, हम mostly यही advise करते हैं for the VRC section that you should read as much as you can because RCs की सबसे ज़्यादा weightage है CAT में in the VRC section and it's very very important that you get used to with reading long passages, long paragraphs, long articles, so that आप used to हो जाते हो कि वहां से keywords आपको कैसे निकालने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे फाइंड आउट कर पाओ. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि एस्पिरेंट्स यूज्ड टू ही नहीं होते हैं विद द रीडिंग हैबिट क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज या फिर इंग्लिश इज समथिंग जो आप बहुत डिलिजेंटली नहीं प्रिपेयर करते हो जिसके लिए. बट अगेन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप रीडिंग से यूज्ड टू रहो सो दैट आप आरसीज अटेम्प्ट करके मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाओ. So start by reading in easier language and gradually move towards more academic writing. However, most comprehensions in CAT can be solved if you have a dedicated reading habit. Next, having a poor vocabulary is another common problem faced by CAT aspirants in verbal ability and reading comprehension for CAT. Definitely, आपके पास if you don't have enough knowledge of new vocabulary words, आपका अगर आपका vocab अच्छा नहीं है, you are not used to with certain types of words, तो वहां पे भी उस केस में भी आप VRC section में problems face करोगे. This is why it is recommended that you read frequently and mark the complex and unfamiliar words. Revising these words regularly will help you to enrich your vocabulary. Next, the inability to understand the questions is another issue that aspirants face in their VRC preparation. तो mostly यही देखा जाता है because RCs, we have done RCs in our life in our school as well, but CAT में RCs are complicatedly different. तो काफी ज्यादा difficult होता है for aspirants to ace the RCs because सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते. तो इट इज क्रूशियल टू रीड थ्रू देम एंड आंसर परफेक्टली डेफिनेटली. सो एडवाइस ही रहेगा कि अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करो एंड एक बार फेमिलराइज कर लो खुद को कि अच्छा ऐसे आरसीज आपको दिखेंगे, ऐसा पैटर्न होगा आरसीज का, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है. ऑल्सो डू नॉट पैनिक व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. Usually, anxiety will cover your rational mind and force you to commit mistakes in the exam.
डेफिनेटली आप एंशियस मत हो, आप पैनिक मोड में मत जाओ एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि यू नो यू आर नॉट गेटिंग अ पॉइंट ऑफ इट, बिकॉज एंशियस होके जो पार्ट आपको आ भी रहा है माइंड में, यू माइट यू नो फॉरगेट दैट एज वेल. सो डेफिनेटली आप ये स्टार्ट कर सकते हो कि आप थोड़े थोड़े पीवाईक्यू से स्टार्ट करो. पीवाईक्यूज में आरसीज पढ़ो, डिफरेंट स्लॉट्स के आरसीज पढ़ो आप, एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि आरसी का ये पैटर्न होता है इन वीआरसी सेक्शन, सो दैट यू गेट वेरी मच यूज्ड टू इट. हैविंग अ वेरी स्लो रीडिंग स्पीड. ठीक है, रीडिंग का हमने आपको एडवाइस दे दिया, बट अगर आप रीड करो एंड यू आर रीडिंग ऑन अ स्लो स्पीड, इट्स नॉट हेल्पिंग यू आउट विद योर वीआरसी प्रिपरेशन. यू शुड मेक श्योर कि आपका रीडिंग स्पीड एटलीस्ट इतना हो कि वो 40 मिनट्स के टाइम के अंदर अंदर आप आरसीज अटेम्प्ट कर पाओ. Most aspirants do not have a reading habit and they struggle to read passages in a time-bound manner. To be able to read on time, a regular reading habit is very much required. आप ये मेक श्योर करो कि आप दिन में एटलीस्ट 1 or 2 लॉन्ग पैसेजेस डेफिनेटली रीड कर रहे हो. Now let us jump into these strategies. तो आपके आरसी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? The first is knowing the structure. Most of the reading comprehension passages follow a set structure. There's an introduction, a body, and a conclusion. So you should be looking for the sentences that change the passage's topic and note them in short highlight the essence of each topic and what they are talking about. तो डेफिनेटली आप एक इतनी बड़ी पैसेज में आपको कंटेंट्स दिखेंगे, यू नो यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो रहा है, व्हाट्स द बॉडी, वेयर इज द मेन कंटेंट एंड वेयर इट्स कंक्लूडिंग. हेंस आपको ये डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए कि पैसेज का थीम कैसे चेंज हो रहा है, टॉपिक कैसे चेंज हो रहा है, एंड यू शुड कीप नोट ऑफ दैट सो दैट आपको एक पूरे पैसेज का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए. Identifying keywords, which is very, very important. Each passage must have certain keywords around the central idea of the passage. You must include marking such keywords in your reading comprehension strategy, as it may help you in answering the questions that will follow. While reading the passage, you can also try to predict what the author might say in the next paragraph. This may reinforce you to reinforce your understanding of the passage. Definitely जब आप passage read कर रहे हो तो आप ये भी predict कर सकते हो कि author next paragraph में क्या बोल रहा होगा. That is what your concentration should be जब आप एक passage read कर रहे हो. तो central idea, while reading, always try to focus on the main idea of the passage. Do not focus much attention on the minor details of the paragraph. As the passages are full of finers, ignoring them while reading would have save you a lot of, in the end, this process is called skimming. Yes, आपको skim through करना पड़ेगा पूरे passage में, आपको central मेन आइडिया निकालना है पूरे पैसेज का, इसलिए जो माइनर डिटेल्स है उसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. एंड ऑफ कोर्स बिल्डिंग अ गुड वोकैबुलरी. The best way to enhance one's vocabulary is by reading more and more and reading from and diverse genres. That means आप एक तरह के जॉनरे से, जैसे सिर्फ साइंस से सिर्फ साइंस जॉनरे से रीड करके आपकी वोकैब इतनी अच्छी नहीं होगी. रीड फिक्शंस एज वेल, रीड साइकोलॉजी एज वेल, रीड अबाउट ह्यूमन माइंड एज वेल, सो दैट आप अलग अलग वोकैब अपनी वोकैब डेवलप कर पाओ, अलग अलग वर्ड से आप फेमिलियर हो जाओ. Now, parajumbles के लिए क्या strategies होनी चाहिए? Let us first understand. Now, parajumble have been part of the CAT VA section for a very long time. As the name suggests, here you are required to rearrange the set of jumbled sentences to form one coherent paragraph. To prepare for parajumble for CAT, focus on understanding the structure of a well-written paragraph, identifying logical connections between sentences through transitional words and the flow of ideas. Practice sample questions, strengthen your vocabulary and grammar skills, and work on time management to become efficient in the parajumble. थोड़ा obvious है कि पैराजम्बल में ऑब्वियसली आपको 4-5 सेंटेंसेस मिल जाएंगे, उससे आपको एक आइडियल पैराग्राफ फ्रेम करना पड़ेगा. वो सारी सेंटेंसेस जम्बल्ड होंगे, यू हैव टू अरेंज देम इन द प्रॉपर मैनर. तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ग्रामर स्किल्स, आपकी वोकैब एंड आप इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए हाउ द फ्लो ऑफ द पैराग्राफ शुड बी गोइंग. थोड़े और की पॉइंट्स हैं जिनको हम समझते हैं दैट यू नीड फॉर योर वीआरसी स्ट्रेटजी. Because VRC is often considered the most confusing section, अगर आपको एज करना है VRC तो आपको 3 चीज काफी ज्यादा ध्यान में रखनी है. That is consistent reading, vocabulary expansion and strategic practice. जितना आप consistently read करोगे and जितना you are used to with the new words in your vocabulary and जितना strategically and consistently आप practice करोगे, उतना you are more likely to perform very well in the VRC section. Building a strong vocabulary by noting down and regularly revising new words is also very crucial. Dividing the preparation into manageable weekly and daily goals, understanding fundamental grammar practices, and consistently practicing CAT VRC questions and mock tests are other essential steps. Now, by following these approach, aspiring candidates can significantly enhance their performance in the VRC for CAT, thereby increasing their overall chances of success in the CAT exam. अगर आप एक बार यूज टू हो जाते हो ये सारे ही स्ट्रैटेजीज से, यू आर वेरी मच लाइकली कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे वीआरसी में. एंड अगर आप वीआरसी में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके ओवरऑल परसेंटाइल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, बिकॉज VRC हैज द हाईएस्ट वेटेज इन द CAT एग्जाम. So I hope you found these strategies useful. Now we are
वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन IIM सिलेक्शन वर्कशॉप जहां पे वील बी कन्वेइंग टू यू कि आप कैसे IIMs और अदर टॉप बी स्कूल्स में सिलेक्ट हो सकते हो विद जस्ट सिंगल अटेम्प्ट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में with personalized approach. I'll be mentioning the link in the description to this workshop so that आप register कर पाओ and timely आपको updates मिले इस workshop के. We'll be coming up with more videos on LRDI strategies as well. We'll be coming up with more videos on what colleges you can target and आपकी क्या preparation strategy होनी चाहिए for CAT under different phases. All the very best aspirants and see you soon.